Hey Aiesec, this is Neha Irfan, your local committee vice president from Aiesec in Karachi for marketing and branding for the term 22 and 23. And along with us, we have. Thank you, Neha. This is Baz Machara, Local Committee Vice President of Partnership Development and Public Relations. Over to you, Neha. Okay, so guys, it's so good to be back once again with our another podcast with an amazing guest that is Bilal Amir, who was the LCVP TM for the term 2017 and 18. So Bilal, why don't you just introduce yourself? Hey everyone, thanks Neha and Maz, and assalamu alaikum to everyone that is listening in. It's great to be back here, and yep, like Neha mentioned, I was part of the EB for 2017 and 2018. मैंने जो है Aiesec join किया था, I believe it was back in 2015 when I was just in my sophomore years at university. तो उस वक्त some people came into my university, they told me about Aiesec, and that's when it all started. तो 2015 में मैंने अपनी जर्नी Aiesec के साथ स्टार्ट करी, and it came to a very fun and happy end at the end of 2018 जब मेरा टर्म खत्म हुआ. And right now I'm currently working at DHL Express Pakistan as a data analyst, and yeah, so Neha and Maz, just let me know what you guys are going to talk about. What an amazing journey. So, Bilal, I just want to know that you have just mentioned that you were in the EB for the term 2017 and 2018. So, I just want to know कि मतलब एक EB का role जब आप जाके apply कर रहे हो तो it's like a big commitment ना, पूरे एक साल तक की आपकी commitment होती है that you have to fulfill. So, I just want to know कि आपकी क्या motivation थी या what were your goals that you had while applying for that leadership role? सही है, डेफिनेटली ये जो आपने मेंशन किया ना कि दैट इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट. तो even though मैंने एक चीज अपने टर्म में नोट करी थी that there were a lot of people in my general body that were very much capable, in fact maybe more capable than myself कि वो EB के अंदर आते, but they had other priorities as well, right? तो एक आपको चीज होती है कि you've been in Aiesec for a good year or two, and then you build up to that role कि आपने you go through different positions कि once you were a team member, then you became a team lead or you became part of some OC, and then जब आपके पास थोड़ा सा एक different experience आपके पास आ जाए, then you think of applying into the EB, because an EB is, like you mentioned, a year long commitment. तो मेरी जो personal motivation थी was to be honest at that time was ये थी कि मेरे पास जो experience था in my short 2 years at Aiesec before my EB was के मैंने जो है I had worked in all of the portfolios that I wanted to work in, और एक बड़ा मैंने experience किया था which was being part of an OC that was for annual recruitment. तो मुझे ऐसा feel होता था कि यार in terms of my personal learning मैंने अपनी personal learning अच्छी खासी मैंने कर ली, maybe it's time to move on. काफी मैंने जो है सोचा कि यार what should I do, whether I should carry on with this, you start focusing on my studies, start focusing on other things in life, and just close the chapter of Aiesec. फिर मैंने realize किया कि having been part of Aiesec, it's sort of your responsibility as well कि अब जो आगे जितने भी लोग आने हैं, जितने भी आपके पास जो Aiesec की generation आनी है, if you've gathered that much knowledge or if you've gathered that much learning being in Aiesec, so you need to impart that knowledge as well. And being in the EB, that is the biggest opportunity that you get. के EB के अंदर जो है इतनी ज़्यादा I would say कि more than learning things, you're actually teaching things to your general body. You're actually setting the culture for an entire next generation and generations to come of Aiesec. तो उसके अंदर मैंने सोचा कि यार even though एक मुझे क्या कहते हैं, even though it doesn't seem कि आप कोई बहुत बड़ा जो है अपने लिए personally आप कोई impact आप create कर रहे हो, but down the line going forward, when you look back, you will see that you were a very integral part of Aiesec. So that was my biggest motivation, towards carrying on for my EB, because I wanted to give back to the only organization that made me what I was in those 2 years. Yeah, that is so great. Bilal, like obviously I've been in the role for like 3-4 months now, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी चीज़ें, और कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिससे आपकी ना मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ना आप बोलते हो यार बस हो गई. तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको उन चैलेंजेस, या कोई ऐसा चैलेंज था जो आपको लगता है कि जो एग्जांपल हो सकता है कि ये चैलेंज आया, मैं इस तरह इससे बाहर निकला, या इस तरह में इससे मैंने अपने आप को बेहतरी लेवल और बेहतर लेवल पे लेके जा सका, लाइक यू फाइट फॉर दैट. कोई ऐसी चीज़ प्लीज़ अगर आप शेयर करें हमसे.
यार I don't think I can recall any specific example, लेकिन एक चीज जो मुझे एक लगता है कि something that was common in all of these examples ना, कि obviously जब मैं आईसेक के अंदर आया तो it's a completely different sort of organization, एक different sort of, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में आप लोग हो, ठीक है, तो you guys know कि there are other different societies and everything, right? लेकिन if you go into those, if you become part of those and if you become part of आईसेक, तो it's a completely different thing, कि वो एक अलग ही स्फीयर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आईसेक के अंदर एक अलग ही स्फीयर में काम हो रहा है। तो आईसेक के अंदर आने के बाद मेरा ये था कि यार if I would, you know, if I do face problems, if I do face hardships कि यार सही से नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, तो communication was the common factor that you know helped me out in all of my problems. So you need to, you know, look for people within ISEC, within the general body, within the executive board, that connect with you not on the work basis but on a personal basis. सही है? आपकी जो communication है, you need to be able to, you know, communicate with people, you need to be able to understand कि यार जो दूसरा बंदा है, if I tell them something about some problem that I'm facing, तो they're not going to judge me about it, they're going to, you know, try and help me out, and they're going to contribute to my journey. And ये वाला जो culture है ना, this is the culture that you guys need to build as well, कि executive board, being the executive board, क्योंकि वहां से trickle down होता है, right? तो आप लोग अपनी और जनरल बॉडी के बीच में आप लोग कोई वो गैप को कम से कम आप रखो, ताकि कोई भी आपसे आके जो है अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आईसी रिलेटेड प्रॉब्लम, व्हाटएवर इट इज दे वांट टू टॉक अबाउट, दे कैन टॉक अबाउट इट विदाउट बीइंग जज्ड. एंड उससे होगा ये कि इफ एवरीवन इज एबल टू, यू नो, कम्युनिकेट ओपनली, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, कम टू सॉल्यूशंस ओपनली, तो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू हेल्प योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू गाइस बीइंग इन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इट्स गोइंग टू मेक योर टर्म बेटर एट द एंड ऑफ द डे. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मास, communication, open communication without judgment, that's the thing that, you know, helped me in my problems. Okay, so like Great, that's really great 100% that you have just mentioned that communication is the key. So और like you know यही एक वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से आप लोगों से like synergize कर पाते हो. तो Bilal, I just want to know कि like जब as a VPTM, like what were the steps that you took कि मतलब लोग आपसे connect करने में easy feel कर रहे हैं, and you know कि VPTM like एक TM एक वाहिद portfolio है जिसका हर portfolio के साथ कोई ना कोई काम लेना देना होता है, और जो भी मसले आते हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्राइसिस आते हैं, तो सब टीएम के पास आते हैं. तो हाउ यू यूज टू सिनर्जाइज विद अदर पोर्टफोलियोज? अच्छा, तो synergy with other portfolios, let's see. अच्छा, जैसे मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि इट्स ऑल अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, सही है? Yes. अगर जो हमारी जनरल बॉडी होती है, जो हमारे आईसेक इन कराची जो भी होते हैं, तो इफ दे सी दैट, यू नो, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, they themselves aren't connected, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, when you're at GBMs, when you're at your portfolio meets, तो उस वक्त आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है where you can, you know, lead by example. अगर आपकी पोर्टफोलियो मीट हो रही है, लेट्स से नेहा आपकी पोर्टफोलियो मीट हो रही है, सही, यू हैव योर एंटायर पोर्टफोलियो कमिंग अप, एंड you know, as a surprise, you call your LCP or you call any of your LCVPs, और उसमें जो है आप थोड़ा सा आप जो एक फन इंटरेक्शन रखवाते हो लोगों के साथ, यू नो, यू जेल इन विद एवरीवन, एंड यू मेक देम फील कि यार नहीं, दिस इज नॉट जस्ट पोर्टफोलियो स्पेसिफिक, कि भाई हम लोग बिल्कुल जो है टॉप सीक्रेट की तरह हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एवरीथिंग लाइक दैट, कि भाई हमारा पोर्टफोलियो तो सारी हमारी पोर्टफोलियो की नॉलेज हमारे उसमें रहेगी. तो अगर आप उस चीज को थोड़ा सा ब्रेक करोगे ना, तो उसमें हो गया कि सिनर्जी खुद ही डेवलप होगी. व्हेन पीपल सी के यार खाली मैं अपनी जो है अपने एलसीवीपी से बात करने के बजाय मैं किसी और भी एलसीवीपी के साथ जाके मैं बात कर सकता हूँ, या किसी और टीम मेंबर के साथ जाके बात कर सकता हूँ, विदाउट यू नो एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉज ऑफ कम्युनिकेशन. तो उससे हो गया कि आपकी सिनर्जी डेवलप होगी. एंड सिनर्जी जो है आपको डेवलप करने के लिए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर यू गाइज स्टार्ट टू वर्क, यू गाइज नीड टू, यू नो, स्टार्ट टू play around with each other, कि आप लोग जो है before you build a work sort of interaction, you guys need to develop a personal sort of interaction, कि आप लोग जो है personally आप लोग अपनी relationship आप लोग आपस में सब build करो, कि you know आप लोग common grounds, you try to find common grounds, you know, you have icebreaker sessions, इस तरह की आप लोग चीजें करते हो. उससे क्या होता है कि besides knowing someone from, कि भाई मैं कहता हूँ कि यार मैं मास को जानता हूँ, मास is the LCVP of XYZ portfolio and he does this job. Instead of knowing that, I want to know Maz is a guy that loves to play football, his favorite football team is Man U, stuff like that. तो उससे जो है आपकी सिनर्जी डेवलप होती है, जब आपके पास एक होता है कि यार यू नॉट जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, बट यू वर्किंग टू, यू नो, बिल्ड ईच अदर अप. तो आपको पता होता है कि आप किस तरह फिर सिनर्जाइज होकर काम कर सकते हो. ये मैंने अपनी टीम में भी फेस किया है कि कुछ आइजेकर्स होते हैं जिनकी मोटिवेशन बहुत लो हो जाती है, या उस तरह पर्सनल इश्यूज चल रहे हो, तो उनको किस तरह आपने वर्कआउट किया कि उनको वापस उसी
वापस उसी मोटिवेशन पे लेकर आना, या वापस उनको बी एन आइजैक उसको उस तरह सपोर्ट करना, उसको इस तरह की एग्जांपल या इस तरह की कोई चीज़ है जो आप बता सकते हैं? Yeah, I'm really glad you brought this up in follow up to this. Uh, there is a lot of times के हमारे पास जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, जो हमारे जनरल बॉडी में लोग होते हैं, they going through a lot of things because हर किसी के, जैसे मैंने मेंशन किया, not everyone has the same story or same background, right? तो आपके पास अक्सर ऐसे लोग होंगे जनरल बॉडी के अंदर which are going through a rough time in their lives, or a rough time at their homes or whatever. Maybe they're worried about their studies, maybe they're worried about something happening at home, whatever, it could be anything. उसमें जो है सबसे पहली जो चीज एक ओपन होनी चाहिए वो ये है that they need to be able to approach their TLDs or their executive board to talk about this problem. सही है? अगर अगर जो है अगर Maz, if you're in my team and I don't know what you're going through, how am I going to be empathetic and sympathetic with you towards our problem, right? तो हम लोग को जो है एक ओपन चैनल क्रिएट करना है, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप. जो लीडरशिप आपकी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप कि वो अपनी टीम को इतना कंफर्टेबल करे कि दैट दे आर एबल टू टॉक दैट ओपनली. ऑब्वियसली एक there should be a level of respect and there should be a level of hierarchy being maintained, but they need to be able to talk openly without fear of judgment कि वो आराम से अपने issues के बारे में बात करें. And once they communicate those issues, तो फिर आपको जो है अपनी टीम की बॉन्डिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपनी टीम से बता दो कि यार ये बंदा जो he's going through these sort of issues, and obviously if they're personal or some sort of उस तरह की नेचर के हैं तो बिल्कुल आप नहीं बताओ, लेकिन just tell them कि इसको थोड़ा सा give him some room, give her some room कि वो थोड़ा सा time off ले ले to get back to whatever they are, whatever they're doing, and फिर वो आगे वापस आ जाए. बिकॉज every person in the team ना, आप लोग when you guys move on to your professional careers, तो आप लोग को पता चलेगा कि जो आपकी JD जो होती है ना, that is not what you're going to do day in and day out. कभी ऐसा भी होगा कि you're sitting at work and you have nothing to do at all, and कभी ऐसा भी होगा where you have more than hundreds of things to do and you have to clock in at midnight. आप midnight पे जाके जो है clock out कर रहे हो अपने ऑफिस से कि भाई अब इतना सारा मेरे पास काम था. And उसमें होता ये है कि when you give extra time because of somebody else, so that also happens in reverse as well कि भाई अगर if you go through a bad time, if you go through a difficult time where you need someone else's support, तो फिर आपकी टीम भी आपको सपोर्ट करती है. तो टीम को ये रियलाइज करवाना कि यार if somebody is going through a problem right now, you need to stand up for them because you're part of their team and you need to support them in this problem, not by कि आप लोग साइड पर हो जाओ और बस लोगों को बताना शुरू कर दो कि यार ये unavailable or stuff like that, but you need to back them up. You need to tell them कि यार कि तुम टेंशन नहीं लो, हम लोग देख लेंगे तुम्हारा काम, कोई मसले वाली बात नहीं है. And try to motivate that person, get that person back on their feet, help them out. And इसी तरह वो फिर उसकी देखो उससे क्या होगा कि अगर उसकी मोटिवेशन लो है ना, if it's a general motivation issue और वो कोई टॉपिक कराता है, बोलता है कि यार मेरे घर पे कोई मसला चल रहा है, तो उसको रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे जो टीम में लोग बैठे हुए, these people care about me, they're trying to look out for me. तो उसकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जो है वापस से डेवलप होगी टुवर्ड्स. अब उसको वापस से पता चला कि यार अगर मैं टीम मीट में बैठूंगा तो लोग मुझसे बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि यार क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स. तो उसकी एक लिंकेज जो है आपकी टीम की बॉन्डिंग वो एक वापस से जो है रीजनरेट होगी. Okay, that's really great. अच्छा, so the thing is, Bilal, you just mentioned कि बहुत सारे लोग होते हैं जो टोपी भी करवा रहे होते हैं, and we have seen them कि मतलब ठीक है वो लोग घूम भी रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जब उन्हें काम दिया जाता है उनके कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है. So I just want to know कि आपकी टर्म में like you were dealing with a lot of people, like you were playing the role of an HR, ठीक है? तो what was the most funny excuse that you have ever heard, और फिर आपने उसके साथ like किस तरीके से रिएक्शन दिया और उसको किस तरीके से केटर करा? Like यार there was this one time हम लोग की GBM जो है बहुत रेगुलरली होती थी. सही है. और उसमें जो है हम लोग अटेंडेंस भी मेंटेन करते थे कि यार who is coming to GBMs regularly and everything. तो उसमें there was this one person that had been absent on the GBMs for quite some time. तो मैंने अपनी टीम को बोला हुआ था कि यार if this person is absent again, तो do let me know कि क्या सीन है, कि आए या नहीं आए, तो फिर हम लोग उसको देखेंगे क्या है. तो अटेंडेंस की जो लिस्ट होती थी वो मेरे पास आ जाती थी बिल्कुल, GBM बिल्कुल चल रही हुई, तो हम लोग जो डोर्स को क्लोज कर देते like after half an hour, और अटेंडेंस की लिस्ट लॉक हो जाती. तो मैंने देखा कि यार this person has had his third or fourth absence, something like that, कोई इस तरह का था. मैंने बोला चलो ठीक है, अब घर जाऊंगा, इसको जरा कॉल करूंगा, because there are times we need to put the foot down and talk to them कि भाई क्या मसला क्या है, नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, how can we figure this out. तो मैंने बोला क्या चलो घर जाया करूंगा. इत्तेफाक ऐसा हुआ कि GBM के बाद जो है सोशल की प्लानिंग हुई. हमने बोला चलो सोशल पे जाते हैं. हम सब वहां पहुंचे जब सोशल पे, तो दैट पर्सन they were sitting there with another group of friends, और जो मसला जो उन्होंने अपना बताया था for not being able to reach the GBM, it didn't look like that at all.
तो Okay. तो But it was a bit he of was a available. हाँ, it was a bit of an awkward confrontation. तो मैंने उससे अपनी टीम को मैंने बोला कि यार जरा जाके से बात करो, उससे पूछो कि तबीयत तबीयत सही है, ठीक है, खैरियत से, because he looks pretty well. तो सीन क्या है? तो इस तरह की होती रहती हैं चीजें, करते हैं लोग. Okay, perfect. अच्छा, बिलाल, वैसे तो हमें खुद भी एज अ टास्क फोर्स में रह चुका हूँ, जो हायरिंग टीम जो होती है उसके अंदर, बट जी. कभी इस तरह की सिचुएशन आई है कि आपके पास कोई सिफारिश आ गई हो कि यार ये मेरा दोस्त है, इसको लेना है, या कोई ऐसा कोई फन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो, और उसको किस तरह आपने डील करा? I would like यार to add, हाँ, I would like to add one point here कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जब आइसेक की जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रही होती है, and they go like, हाँ. यार तुम्हारी तो जान पहचान है, तुम तो बड़े रोल के ऊपर है, तुम लगवा दोगे. So let us know about that, please. यार एक सीन था, एंड इफ माय एग्जीक्यूटिव बोर्ड गेट्स लिसन टू दिस, they're gonna be very pissed off with it as well. तो हुआ ये था कि जब हम लोग एग्जीक्यूटिव बोर्ड का टर्म था, तो बेसिकली जो टीएम की जो सिनर्जी होती है एलसीपी के साथ, दैट नीड्स टू बी कॉन्क्रीट, राइट, दैट नीड्स टू बी वेरी सॉलिड. क्योंकि एलसीपी इज द एलसीपी, और एलसीपी टीएम इज सॉर्ट ऑफ लुकिंग आउट फॉर द एंटायर जनरल बॉडी, और जो बाकी पोर्टफोलियोज के एलसीपीज होते हैं, दे हैव देयर ओन पोर्टफोलियो टू लुक एट, लेकिन एलसीपी टीएम हैज द एंटायर जनरल बॉडी लुक आफ्टर आफ्टर द एलसीपी. तो हम लोग की जब एनुअल रिक्रूटमेंट वगैरह हुई ना सारी, तो हमारे पास काफी लोग जो है शॉर्ट लिस्ट हमारे पास हुए. अब हम लोग का जो है एक डिस्कशन हुआ, एंड माय एग्जीक्यूटिव बोर्ड, दिस माय ईबी, दे स्टिल टेल मी कि यार तुमने हमारे साथ ये गलत किया, तुमने हमें पागल बनाया. लेकिन तो हुआ ये था कि हमारे पास बहुत सारी जो है रेज्यूमेस हमारे पास फिल्टर आउट हुए, लोग बहुत अच्छे थे एंड एवरीथिंग. लेकिन ऑब्वियसली जो मेरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड थी, आई वांटेड देयर इनपुट. यार मतलब दीस गाइस हैव बीन विद मी फॉर वन एंटायर ईयर, एंड उनका मुझे इनपुट चाहिए था, एंड ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं उनके बगैर कोई डिसीजन लूं. तो मैंने फिर कुरत को मैंने बताया, हु वाज माय एलसीपी एट दैट टाइम. मैंने बोला कि यार इस तरह हमें करना चाहिए, and we should talk this out as a team, because we can't just say कि भाई हमने decide कर लिया, and we go forward with it. तो उसने बोला हाँ सही है. तो हमने क्या किया कि we had an entire हम लोग की EBM होती है, executive body meeting होती थी, उसमें हम लोग ने सारे जो है resumes रखे, and basically जिन होता ये था कि जो interviews होते थे उसमें एक executive board का member का होना present जरूरी होता था. तो जो हमने initially जो मैंने filter out मैंने करे थे LCP के साथ बैठ के, तो वो हमने जो है अपनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को दिखाया कि ये हमने फिल्टर आउट करें, एंड यू वर पार्ट ऑफ दीज इंटरव्यूज, तो आप लोग अब इसमें से बताओ कि हाउ शुड वी फिल्टर देम आउट मोर. तो वो बड़ी लंबी हमारी जो ईबीएम हुई, उन्होंने पूरा पूरा बताया, ये डिस्कशन वो डिस्कशन सब उन्होंने बताया, सब उन्होंने हमें सारी चीजें बता दी कि इस तरह करना चाहिए, ये बंदा ले लो, ये अच्छा है, मैं इसको जानता हूँ, ये है वो है, सब स्टफ लाइक दैट. फिर वो जो है सब डिस्कशन हो गया, टॉपिक उसका क्लोज हो गया. फिर उसके बाद मैं और कुरत बैठे अलग से. देन व्हाट वी डिड वाज, इवेंचुअली हमने ये किया कि हमने उनका इनपुट तो ले लिया था, बट इवेंचुअली जो हमने डिसीजन लिया, दैट डिसीजन वाज माइन एंड कुरत्स. और हम लोग ने फिर एट दैट टाइम माय एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाज लाइक यार हाँ, इन लोगों ने हमारी बात भी सुन ली है, सब चीजें कर ली है, लेकिन बीइंग द एलसीपी टीएम एंड बीइंग द एलसीपी, यू हैव टू डू इट इन अ वे के आप सबका इनपुट भी ले लो, एंड ऑब्वियसली द इनपुट दैट दे गेव, इट वाजंट लाइक इररिलेवेंट और एनीथिंग लाइक दैट. बिल्कुल उन्होंने सही अपनी चीजें बताई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जिस पर्सपेक्टिव से हम लोग सोच रहे होते हैं, जनरल बॉडी के हवाले से या पूरी ओवरऑल पिक्चर के हवाले से, कि देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट पुट इन व्हेन गेटिंग समबडी ऑन बोर्ड. तो वो वाली चीज कंसिडर करनी होती है. वेराज जो एक एलसीवीपी ऑफ अनदर पोर्टफोलियो सोच रहा होगा, मे बी उसकी जो थॉट प्रोसेस होगा, दैट माइट बी लिमिटेड टू देयर ओन पोर्टफोलियो, इट कुड बी, या वो अपने पोर्टफोलियो के हवाले से सोच सकता है. तो वहां पे जो है फिर आपको डिसीजन जो है खुद लेना पड़ता है. तो यू कांट ऑब्वियसली से टू देम डायरेक्टली, बिकॉज एक इंटरेक्शन खराब हो जाती है. आप उनको डायरेक्टली मुंह तो नहीं मना कर सकते कि यार नहीं आप इसका बोल लो तो मैं लूंगा ही नहीं इसको. यू हैव टू इवैल्यूएट इट कि यार अगर बंदा चीज सही बोल रहा है, इफ दैट पर्सन इज केपेबल टू फिट इन और नॉट, तो इट्स फाइन. इफ ही इज नॉट, इफ शी इज नॉट, देन यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू. सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी रहा था, और जब आई वाज इन टास्क फोर्स, तो मेरा एक दोस्त था, उसकी एक दोस्त थी, वो बोला था कि उसको इन कराना है. एंड आई वेंट टू माय एलसीवीपी, उस वक्त जो टीएम थी, और अर्जक खान थी. तो अर्जक ने बोला कोई बात नहीं, हम इंटरव्यू ले लेते हैं, और इंटरव्यू वेंट रियली रियली ग्रेट. और फिर हुआ ये कि वो लड़की आई, और उसके बाद 1 महीने बाद उसने काम करना छोड़ दिया, और उसके बाद वो आइजैक से भी छोड़ के चली गई. उसके 1 महीने बाद, एग्जैक्टली तो 2 महीने एग्जैक्टली बाद आइजैक छोड़ के चली गई. एग्जैक्टली और ऐसा ही होता है यार, फिर ऐसा मेरी ही होता है. वो इतना ऑफ था, लाइक आई कुडंट फेस हर. बहुत ऑफ सीन हुआ था वो, लाइक आई कैन टोटली रिलेट टू दैट.
ऐसे ही होता है यार। इसकी एक और मैं एक नेगेटिव एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन माय एलसीपी टर्म, तो मेरी भी ऑब्वियसली कुछ लोगों से इंटरेक्शंस हुई, तो आई गॉट टू नो दैट इस मुझसे पहले इस तरह एक दफा हुआ था कि यू नो समबडी गॉट ऑन बोर्डेड बिकॉज ऑफ यू नो पर्सनल आपकी जो इंटरेक्शन थी उसकी वजह से किसी को ऑन बोर्ड कर लिया कि यार ये मेरे उसको पर आ जाए, इसको कर लो, अंदर कर लो, इसको कर लो। तो वो खैर वो आई कांट इवन रिमेंबर कौन था वो, तो खैर वो आ गए वो लोग, एंड व्हाट दे डिड वाज यू नो दे सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड सम प्रॉब्लम विद इन आइसेक इटसेल्फ। वो कुछ अलग ही उन्होंने कुछ मसला क्रिएट कर दिया था। तो फिर जिस बंदे के थ्रू वो आता है ना, तो ऑब्वियसली अब आप जो अपनी एमसी हो, आप एमसी को जाके नहीं बोल सकते कि यार मुझे तो इसने कहा था कि इसको कर लो, कुछ मसला नहीं होगा। द एलसीवीपी टीएम इन द एलसीपी दे आर अकाउंटेबल फॉर एवरी पर्सन दैट इज बीइंग ऑनबोर्डेड, एंड तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू नीड टू यू नो मेक अ वाइज डिसीजन कि आप जो हो द पर्सन दैट यू ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड, यू नो दे गोइंग टू बी ट्रू टू द वैल्यूज ऑफ आइसेक, एंड यू नो दे नॉट गोइंग टू यू नो डू समथिंग एल्स, आपका काम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। Okay, but it was like really nice to know about all the experiences that you had while in being in your EB term और आपका जो भी like 2015 से जो Isaac का एक journey रहा. So let's move forward to our last question, and ये एक wide question है जो मैं like अपने सारे guests से पूछती हूँ. So Bilal, I just want to know कि what advice and suggestion you would like to give to the current Isaacers in just one word. Yeah, it's इन okay, जस्ट आप वन दो वर्ड। words, yeah, it's one word. अच्छा अच्छा, चलो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। एक चीज जो अब होने लगी है वो ये मैंने देखा था आफ्टर माय टर्म वाज के अ लॉट ऑफ पीपल यू नो दे नॉट गिविंग द टाइम दैट दे शुड बी गिविंग टू आइसेक। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, राइट? इट्स अ टू वे स्ट्रीट। जितना टाइम आप दोगे उतनी ही आपको जो है रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ इट। जो आइसेक की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी आपने चीजें सुनी है, यू नो लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, एवरीथिंग लाइक दैट थिंग इज गोना हैपन, बट टू मेक इट हैपन you need to happen as well. You need to happen, you need to be present, you need to have physical meetings, you need to have GBMs, you need to have EBMs, you need to interact with everybody, you need to get out of your comfort zone. आपकी जो कंफर्ट जोन है, जो आपका एक माइंडसेट है ना, वो आपको तोड़ना है। आइसेक के अंदर होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यू गेट टू इंटरेक्ट विद सच अ डाइवर्स लॉट ऑफ पीपल कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो पूरी रिवैम्प हो जाती है। बट टू गेट देयर, बट टू अचीव दैट थिंग खाली बातों से नहीं होगा, आपको एक्चुअली आके फिजिकली ये चीज करनी पड़ेगी। यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, गेट टू नो देम फिजिकली, यू नो मीट एवरीवन, हैव फिजिकल मीटिंग्स, डू थिंग्स टुगेदर। आपको अगर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कोई अपनी आपने कोई जो है लेट्स से इवन अगर बीइंग इन टीएम अगर आपने कोई इवैल्यूएशंस करनी है अपनी, तो सिट। I know there's a lot of solutions available on the internet, you know, where you can have a Zoom call or go into Google Meets. आपने Google Drive पे अपनी Excel sheet खोल ली और वहां पे अपने सारी evaluations कर ली, but don't do that. आप टाइम निकालो अलग से, साथ बैठो, डू थिंग्स, बिकॉज यू नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट जस्ट वर्क व्हेन यू सिट टुगेदर, यू गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 100 अदर थिंग्स, और उसमें ही जो है आप डेवलप करोगे, उसमें ही आप कुछ नया सीखोगे। Okay, so it was really nice, Bilal, to have you today with us, and I'm pretty sure कि आज हमारे जितने भी listeners होंगे, जितने भी Isaacers होंगे, they must have learned so much from you. So let's call it a day. So signing off as Nihar Khan. Signing off as Maz Bachara, PDPR. Thank you so much for that. थैंक यू गाइस, थैंक यू।